बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद शेख। प्रोग्राम हम और टेक्नोलॉजी के साथ। सामीन, आज का हमारा मौजू है डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा वेयर हाउसिंग इतना पुराना सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन यूँ समझ लें 1992 में हुई थी। डॉक्टर इनमॉन ने कहा कि अगर हमारा जो पुराना डाटा है उसको भी यूटिलाइज़ किया जाए। तो चलते चलते बहुत सारी कंपनी इन्वॉल्व हो गई इसमें, और 1998 में डाटा वेयर हाउसिंग को एकेडमिकली इंट्रोड्यूस करा दिया गया यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसी टॉपिक को लेकर हम आगे चल रहे हैं, डाटा वेयर हाउसिंग को। क्योंकि डाटा वेयर हाउसिंग जो है इट्स वेरी हॉट टॉपिक, और इसकी डिमांड भी काफ़ी है, और इसके अंदर जॉब्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो चलिए सामने आज हम डिस्कस करते हैं डाटा वेयर हाउसिंग। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब मसूद अली साहब, जिनकी स्पेशलाइजेशन है बिग डाटा और डाटा वेयर हाउसिंग। तो चलिए उन्हीं से एक सवाल करते हैं। आप अपना तारुफ कराएंगे? शुक्रिया अली साहब। मेरा नाम मसूद अली है, और आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर at least 15 years as a practitioner for data warehousing, data analytics, in this whole area of data management and data strategy. तो ये बताएं कि डाटा वेयर हाउसिंग है क्या? क्योंकि बहुत दफ़ा सुनते हैं, और पिछले 10-12 साल में तो इसका नाम बहुत ज़्यादा आता है। तो ये है क्या? Good question. In a very simple way, अगर हम उसको देखें तो it's all about getting data and using data to derive some insights जो कि business then can take and do better in their processes. यानी कि आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फोरकास्टिंग, उसको so it's all about using data to drive some business value, और उसके साथ साथ there are all slews of on a technical term there are all different things that needs to be done to the data जिससे कि वो वैल्यू प्रोवाइड कर सके जो कि इज़ नीडेड एट द एंड ऑफ द वैल्यू चेन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब कि हम अभी डाटा वेयर हाउस के एंड पे तो बाद में पहुंचेंगे। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो जब आप स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे ये बताएंगे कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या देखते हुए स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए? और बिल्कुल, डेटा वेयर हाउसिंग में द वेरी फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग जो कि इन्वॉल्व है इज़ इंफॉर्मेशन प्लानिंग। एंड इंफॉर्मेशन प्लानिंग इज़ मोस्टली अबाउट working with your business partners, understanding their business use cases, and working with your technology partners, associate technology partners, to understand where is all the data that can help in answering those questions or use cases that the business is striving for. So the information planning is all about identifying various different sources. As an analyst, for example, as a business systems analyst, identifying various different sources in a large organization, where the data could come from, when to pick the data, what data do we need, how do we bring the data, and what are the rules that the business is asking for, or at least the business is describing what they want, what are the relevant rules that needs to be applied to produce the output. So the first and foremost step is really around information planning, information analysis. तो अगर डेटा वेयर हाउसिंग के फ्रेमवर्क को देखा जाए तो उसमें क्या वो आके आपको कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए? Typically, it's a very good question. अगर आप देखा जाए, if you go back 15-20 years, data warehousing, जैसे आपने कहा कि it's not an old field, but when the data warehousing started, the notion was that we are going to build something where all the enterprise data is going to come,
and the business is then going to consume it. So the strategy, the mindset was, okay, we will build and they will come and consume it. What has changed over the last several years is it's all becoming more business value driven. So the question is really working with the business to identify what are the use cases they are trying to solve, and then translating that into the data vocabulary कि कहाँ से data आएगा और कौन सा data is more relevant. तो आपका question कि whether they come, I think it's really business value driven. So business value driven, there are opportunities and challenges in the business areas that needs to be driven to or translated to the data needs, and the way data warehousing is being done over last few years is it's no more big bang approach, or rather how do we manage data and evolve so that we build our data warehouse, our data asset, as well as produce business value as we evolve. तो इसका मतलब कि इसमें तो बहुत सारी जॉब्स इन्वॉल्व होंगी. तो मिसाल के तौर पे आपको रॉ डाटा दे दिया गया है, तो आप उसको कैसे, मेरा मतलब था वो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ होती है, कौन सा टूल यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल सही. That's a good question. There is no shortage of data. Exactly. A big financial organization, data comes from different sources, operational sources, and in some cases there are multiple different applications servicing the same product or providing the same kind of data or producing the same kind of data. So for example, in banking industry, there could be multiple different systems, different physical systems that are doing deposits account, for example. So the first and foremost thing when you get the raw data from all these different sources is really doing the data profiling. And there are tools and technologies out there that is helping to make this task easier and do it at scale. But the first and foremost thing is profiling the data, understanding what are the nuances in the data coming from various different sources. यहाँ मैं ज़रा सामीन को बताता चलूँ कि क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम का मकसद जो है उन तक इंफॉर्मेशन पहुँचानी है कि इसमें किस तरह की जॉब्स इन्वॉल्व होती हैं. क्योंकि जैसे भी आपने जिक्र किया कि प्रोफाइलिंग अंडरस्टैंड करना, तो नॉर्मल अगर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में देखें तो हम प्रिलिमिनरी स्टडी बनाते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन यहाँ से हमें ये लगता है कि एक और जॉब इन्वॉल्व, जैसे हम कहते हैं डाटा स्टूअर्ड, ठीक है, यानी कि उसका भी इन्वॉल्व, यानी कि और भी डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब्स इसमें इन्वॉल्व होंगी. कुछ अगर इसके ऊपर आप नजर डालें तो. फॉर श्योर. तो जैसे आपने लेट्स टॉक अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन, and then we'll layer it over with the different types of jobs that are needed or skills that are needed to do that job. So जैसे मैंने कहा कि data profiling. Data profiling is not about just doing a SQL against a data source or finding out कि भाई ये integer field है, ये date time field है, या ये character field है. Data profiling is also about knowing कि what is some data quality metrics around that particular data source. For example, अगर आप देख रहे हैं, अगर client data है आपका और उसमें client identifier ही missing है from some source, then it talks to the credibility of that data source, right? So in that respect, you not only need someone who is technical enough to be able to take the source data and provide some of these and apply some of these rules to produce some quality metrics, but you need a business person like a data steward to say whether they can live with that kind of a quality for the use case that they are envisioning. Because as you know, data quality is really dependent on the business context and that it is going to be used for. If I want to use data for regulatory reporting, for example, I need to make sure that it's 100% from get-go. But on the other hand, if I want to use it for, let's say, understanding what the market segments are like for this new type of product that I'm trying to introduce, then it's a little bit more lenient, right?
So there are two very important skill sets that are needed as part of the data profiling. Is really the data analysis. Someone who is having SQL skills, SQL skills, or data mining related skills, and a person, a business analyst who can then make a decision based on what they are seeing as part of the results. तो इसमें जो टेक्निक्स हैं वो क्या सब एक जैसी हैं या डिफरेंट हैं? मतलब अभी मैं कंपनीज पे बाद में बात करेंगे। Sure. तो क्या सबका एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही तरह फॉलो करते हैं कि अपना अपना कोई डिज़ाइन होता है उनका वेयर हाउस बनाने का? On a larger scale, there are some best practices. There are common best practices that are out there to source the data, to acquire the data, to stage the data, जी बिल्कुल। to integrate the data, and then and produce that access layer or make it available for access and visualization by the end users. लेकिन वो सब एक जैसे होगा, जैसे हम ETL कहते हैं, एक्सट्रैक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लोडिंग है, तो सब एक ही जैसा काम करते होंगे। जी सो अगर इन लेयर्स को अगर हम देखें, लॉजिकल लेयर्स को अगर हम देखें, एक्वायरिंग डेटा, स्टेजिंग डेटा, इंटीग्रेटिंग डेटा, एंड पब्लिशिंग द डेटा, तो out there in the industry there are a lot of tools that does that. It's all about data movement, right? From one point to the other point to the other point. So there are a lot of data movement tools out there that are better than the others, right? To help and has evolved over last several years to make this whole data pipeline, जो कि मैं इसको कहूँगा, easier to manage. लेकिन the secret sauce is really around how are you organizing that data? Because the key thing in data warehousing is how do we reuse the data for different purposes. मेरा ख्याल है कि मैं कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल साइड पे निकल गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर डेटा वेयर हाउस फील्ड में आना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट होने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं to be in the data warehousing field, there are various different jobs. Let's start with the data analyst. Someone who has good analytical mindset to start with. Analytical mindset matlab being able to ask questions against the data, and good in structured query languages to start with, SQL जिसको कहते हैं, so that's the first and foremost thing. फिर उसके बाद if you know some tooling around automated tooling like ETL toolings and you have some skill sets around it, there are data stages, Informatica, Ab Initio, there are all different sorts of incumbents that play in this area. That is one of the key thing that is needed as part of the whole data warehousing. सामीन, आपने देखा कि मसूद अली साहब से हमारी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चल रही है और हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर हम वक्फा लेना चाहेंगे और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक सामीन। तो हम डिस्कस कर रहे थे डेटा वेयर हाउसिंग। तो चलिए वापस चलते हैं मसूद अली साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि डेटा वेयर हाउसिंग में कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। तो आप ज़रा उस पर नज़र डालेंगे? बिल्कुल। लार्ज प्लेयर्स in this field are players like Teradata, Oracle, IBM itself, and there are a lot of niche players, or even the most emerging technology vendors like Amazon, Microsoft on the cloud like Azure, and there are a lot of small to medium sized companies that have ventured into this world. तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब the value of being in this area and knowing to manipulate data is huge, and that's why a lot of different companies are venturing into this data warehousing and data analysis world. तो जैसे आपने कहा कि IBM भी इन्वॉल्व है और माइक्रोसॉफ्ट भी है, अमेज़ॉन भी है, तो ये जो कंपनी है ये क्या अपने सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या इन्होंने कोई एक ही सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसको यूज़ करते हैं? अपनी
क्या अपनी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं? अगर आप Oracle को देखें और IBM को देखें टू स्टार्ट विद एंड इवन Teradata, अगर आप देखें their genesis, they started with Oracle, for example, started with the relational database management engine. And one of the key things that is needed in data warehousing is where to store the data. So you need some sort of a data repository. And तो Oracle को देखें, then they have basically leveraged their platform, their relational database management systems, and layered various different tools and technologies on top of it, and to curate the data or to take the data from the very raw stage to the next best stage where it can provide some insight. But on the other side, there has been, and so that's Oracle doing. On the other side, there are a lot of technology vendors like Informatica, where their genesis was not really in the database management system, but they took the market of, okay, if someone is using Oracle, how can we provide that technology agnostic way or platform agnostic way of manipulating the data, or they call it data wrangling as well, or ETL, extract, transform, and load is another word that is used in the industry. How do we provide organizations one tool so it can work with various different platforms on databases and provide those skills, or the work that is needed for data warehousing. So in parallel to Informatica, IBM has also ventured into and developed the product called InfoSphere, which is also platform agnostics. It can go against various different sources, various different types of sources, and do the data wrangling. इस तरह जैसे गोल्डन गेट है, SSIS है माइक्रोसॉफ्ट का. Yeah, Golden Gate has a very specific and niche use. It's pretty Oracle में it's really around a data replication. And what that is basically replicating the data from one to the other in a very high speed fashion, and there is always that need in data warehousing. For example, अगर आप data किसी big financial firm के लिए आप data warehouse बना रहे हैं, then you need to ensure that there is a disaster recovery and business continuity of it as well. So how do you take the data from one place and replicate it quickly on the other side, so that if there is a business continuity issue, at least you can translate or redirect the workload to the other platform that you have provisioned for it. So Golden Gate, as आपने कहा, is a data replication tool. Data synchronization tool is also used. Infospheres and Informaticas of the world, they are more transformation, rule-based transformation, and now even into artificial intelligence rules-based transformation of data में यूज़ होते हैं. यहाँ थोड़ा सा कुछ टू टेक्निकल हो जाएगा. मेरा मतलब था कि अगर जैसे आप क्लाउड पे जा रहे हैं तो क्या उसमें सिक्योरिटी का इश्यू नहीं आता कुछ, कि मेरा डाटा जो है वो एक थर्ड कंपनी यूज़ कर रही है और संभाल रही है उसको, क्या करेंगे उसको, कैसे करते हैं उसको? It's an excellent question. आजकल cloud is a word that is on everybody's mind, even in the data world, in financial institutions or the others. And one of the big aspect of or reluctance by big firms to move to cloud is really this piece. How do we ensure the security of the data? अगर आप banks को ले लें तो the most important asset that they have is the consumer confidence. Consumer having a confidence with the bank to trust their data or the consumer's data, for example, name, addresses, and my account balances and all that kind of stuff. And so the consumer is relying on the bank, and the bank needs to make sure that when they go to cloud or how do they protect the data. So there are a lot of companies that are out there that are providing solutions to encrypt data at rest, in motion, obfuscate data at rest, in motion, to facilitate that movement of companies leveraging the cloud. मेरा ख्याल है क्लाउड पे हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि उसमें ज़ाहिर प्लेटफॉर्म सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्राइवेट पब्लिक क्लाउड आपने जैसे पहले भी जिक्र किया. तो मसूद साहब ये बताएंगे कि इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है इस वक्त? When it comes to data, industry trend is all about
having access to large amount of data from various different sources. जैसा कि आपको ज़्यादा होगा कि with this devices, even your mobile is producing data. So the industry trend is consuming the data in coming from various different types of sources in various different forms and factors, and making it and putting it to business use. So industry there's a lot of push towards doing computing. They call it edge computing, for example. With all these devices, smart devices that we have, let's take an example of a camera in a fridge itself, जो कि आपको बता सके कि what kind of groceries do you need. And while you are in a grocery shop, you need to know, okay, do I have milk in my fridge or not? So having that capability, being able to tap into that device, that is and that device having that intelligence to be able to look through all the aisles and find out which is milk and say, yes, there is a milk. So there is a compute that is needed on that particular device. So there is a lot of push that is happening from the technology perspective to do edge computing at the edge, and then producing the information going back to the person who asked for it. In that particular case, for example, myself in the grocery store asking whether if I have milk or not. So the trend is about edge computing. The trend is about how do we make this whole data warehousing value chain more automated. More automated. How do we instill machine learning and artificial intelligence that can look at the data and say, okay, bhai, this data to me looks like this other data that is coming from totally different source, because the value of the data is really when you combine data from multiple different sources to produce. So artificial intelligence, robotic, there's a big push in robotics area. आप क्या समझते हैं कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है? क्योंकि बाज़ का ऐसे होता है ना, जैसे अगर आप 90s में देखें या अर्ली 2000 से लेकर 2010 में देखें तो बहुत सारे डेटा वेयर हाउस के प्रोजेक्ट्स फेल भी हुए हैं. जैसे मुझे एक का याद है, यू हॉल का फेल हुआ था, और भी कुछ है नज़र में. तो उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त, उनका क्या ट्रेंड है? Those organizations that have learned from the past are probably doing good. जैसे कि मैं जब वेयर हाउसिंग शुरू हुई, जैसे मैं पहले अर्ज किया, it was more around how do we bring the data and make it available for business consumption. The trend has totally changed. How do we evolve this data landscape while we are helping the business? Because companies don't have money to invest in something for which they can reap benefits in 3, 4, 5 years. They want return on investment in the matter of months now. So the whole idea has changed. How do we do the best for the data and using the data, but how do we do it in an incremental way and organize the data in an incremental way to produce that business value? तो वैसे तो अगर देखा जाए तो क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि डेटा वेयर हाउस या वो पुराना डेटा लेके उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर उसकी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या फोरकास्टिंग या जैसे आपने बताया कि वो बहुत सारे काम में यूज़ होता है. तो क्या लाइव डाटा को भी ला सकते हैं उसमें? जी, अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनली डेटा वेयर हाउसिंग मोस्टली अराउंड बैच, taking a data at the end of the month, for example, from some sources and then producing the reports. With this Internet of Things, and there has been a great push towards having real-time streaming data coming into the warehouse and using warehouse environment as a platform to serve the operational needs of an organization. When I say operational needs, meaning being able to provide that input while a teller, for example, is talking to a customer in that capacity. तो सामने देखा आपने कि हमने आज मसूद अली साहब से गुफ्तगू की और इन्होंने हमें बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दी, और ये टॉपिक तो बहुत लंबा है और ये तो एक प्रोग्राम में कवर नहीं हो सकता, क्योंकि माशाल्लाह इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो आगे बिग डाटा में भी है, ERP में भी है. तो हम इस मौजूद के ऊपर दोबारा फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि डाटा वेयर हाउस एक ऐसी फील्ड है
एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें बहुत सारी जॉब्स इन्वॉल्व हैं हर स्टेप के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग आती हो तो आप इसमें आ सकते हैं, आप सिस्टम को समझते हो। जैसे मसूद साहब ने बताया कि आपको डाटा की समझ होनी चाहिए और उसके आपको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके आप कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं और वो कैसे आपके मैनेजर्स या हायर मैनेजमेंट के लिए वो यूज़ हो सकता है। तो सामीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। आप हमारा ईमेल एड्रेस देख रहे होंगे humortechnology@hotmail.com। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें उससे ज़रूर इत्तला कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।